Hello everyone and very good morning all. Very good morning everyone and welcome you all to Odisha 24/7 Odia YouTube channel. समस्त very good morning. Good morning all. Welcome you all to Odisha 24/7 Odia YouTube channel and this is Satya sir Pedagogy. समस्त वेलकम करुच्ची Odisha 24/7 ओडिया को पेडागोजी को ओके समस्त पिला माने भलो अच्छो ठीक ठाक अच्छो रेडी पढ़ापढ़ी ठीक ठाक चलची चलो यस तो आम मैंने डिस्कसन करुच्ची पिला माने आपनकर SSB TGT रिगार्डिंग पेडागोजी सेतरे आमे ऑलरेडी लर्निंग रही डिस्कसन करुच्ची सिलेबस वाइज सिलेबस टॉपिक और टॉपिक सब टॉपिक वाइज डिस्कसन करुच्चे छोट छोट लर्निंग प्रोसेस भितर सब टॉपिक जमी लर्निंग ट्रांसफर लर्निंग कर्व फैक्टर्स एटा सिलेबस मेंशन है बट दैट दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम पचरा है मध्य आगु ठीक अच्छे सो आज आम डिस्कसन हो पे ह्यूमानिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग जोटा आप कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो थ्योरी ऑलरेडी अब्राहम मास्लो कॉन्सेप्ट मु हायरार्की ऑफ नीड्स डिस्कसन करी कुतरे आपनकर मोटिवेशन रे गुड मॉर्निंग एवरीवन थैंक यू अनन्या थैंक यू गॉड ब्लेस यू वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन चलो तो समस्ते सेशन को टिके लाइक एंड शेयर कर दियंतु देन विल स्टार्ट आवर सेशन स्टार्ट करिया हमें ओके चलो डन तापर आपण मन पे गोटे छुटिया थरप दे हाफ ऑफ द जर्नी टू सक्सेस इज बिलीविंग इन योर कैपेबिलिटीज जर्नी रो हाफ सक्सेस रो हाफ तमर कैपेबिलिटी पर विश्वास रखले हुए इफ यू हैव बिलीव ऑन योर कैपेबिलिटीज इफ यू हैव बिलीव ऑन योर एबिलिटीज सेटा ही अब्राहम मास्लो कहउछंती सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत इंपोर्टेंट यू हैव टू एक्चुअलाइज योरसेल्फ मोर पावर कौन मु कौन करि परिबी व्हाट यू कैन डू ओके दैट इज वेरी इंपोर्टेंट नमस्कार लालानंदू थैंक यू लक्ष्मी पेस थैंक यू एमागिन तो आज हम डिस्कशन करिबा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो हमें लास्ट होमवर्क आंसर डिस्कसन करिबा तापर थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग सेतिक डिस्कसन करिबा थ्योरी सहित एमसीक्यू मध्ये डिस्कसन करिबा ठीक अछि थैंक यू रश्मिता थैंक यू समस्त थमतो थैंक यू भगवान समस्त को मंगल रखन ता सहित आमे लास्ट को होमवर्क मध्ये अछि होमवर्क जोटा दउ होम टैक्स दउ सेटा समस्त टिके निजे करिके आंसर कमेंट बॉक्स में करंतु ठीक अच्छे चलो समस्त रेडी पिला माने रेडी एटा लास्ट होमवर्क आंसर देखि दियंतु फॉर ए टीचर थैंक यू ओस्के वर्ल्ड थैंक यू मोनालिसा थैंक यू पीके फोटोग्राफी फॉर ए टीचर थैंक यू मनीषा फॉर ए टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड रे लिखला बेले को जिंस प्रति आपण फोकस करिया दरकार राइटिंग फास्ट एज क्लियरली थैंक यू लक्ष्मी बेपत्र थैंक यू अंकिता राइटिंग द मैटर फास्ट देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट देन राइटिंग द आंसर राइटिंग द इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्लियरली एज पॉसिबल हमें बेसिकली ब्लैक बोर्ड रे सब बेले क्लियरली लिखु और इंपोर्टेंट पॉइंट लिखु वी आर राइटिंग द नोटेबल पॉइंट्स और इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इज as clearly as possible so D will be the right answer जो माने भी राइट आंसर दे छंदी समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अछि थैंक यू मनोज ओके डन तो आज हम डिस्कशन हो ह्यूमनिज्म हम एबाउट कार्ल रोजर्स के विषय पढ़िबा कार्ल रोजर्स कर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग विषय पढ़िबा रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म रोल ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म रा अप्रोचेस ऑफ लर्निंग ठीक अच्छे थैंक यू लिनाक्सी अच्छा तो ये जिनस डिस्कसन करवा ह्यूमनिज्म अबाउट कार्ल रोजर्स नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म रोल ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म तो दिस विल बी द अवार्ड एगुड़ा को डिस्कसन आज So this is the man, humanistic approach of learning, Carl Rogers. Okay.
Thank you, Pragya. The curious paradox is that when I accept myself just I am, then I can change. A बहुत important line. Curious paradox is that मुझे तो accept करी जे मु किए, more capacity कौन, मु कौन पारिबी, then I can change myself. Then I can change myself. Okay. Thank you, Namita. So it was a self-actualization. This is called as self-actualization. This is called as self-actualization. Done. So about Carl Rogers and his thoughts. Carl Rogers को विषय जानेगा जी. Carl Ransom Roger, 1902 to 1987. Okay. Was a psychologist who developed the theory called unconditional positive regard. जो theory develop करते हैं, theory नाम है unconditional positive regard. कौन unconditional positive regard माने? He believed that children learn through unconditional acceptance and understandings. Suppose as a parent, मु पिला को support करूँ, तो condition रखी support करियो कि तू जदि एटा करिबु ताहाले मु तो पे एटा करिबि, काहेकि निकिता तू जदि एटा मो पे करिबु मु तो पे एटा करिबि, ठीक अछि, एटा तो कदा भी नुहे ना, इट इज नॉट पॉसिबल. आज ए टीचर समय जते पिला को सपोर्ट करछ, योर कंडीशन शुड बी अनकंडीशनल, योर सपोर्ट शुड बी अनकंडीशनल एंड योर अप्रोच शुड बी पॉजिटिव. When you are supporting the child unconditionally, selflessly, and showing the positive regard towards them, showing the positive approach towards them, the सब better हो. बुझिपाले? बुझिपाले? Thank you so much. Thank you Arvind. Sagrika सांग thank you so much. Digital trunk thank you नहीं जा. बांटी कुंडी की use कर दो. So unconditional positive regard मैंने when you are supporting your child or when you are supporting your student unconditionally, without condition, selflessly. ठीक है जी. So Roger's theory is based on his own experience working with the children. निजे पिलांग सहित वर्क काम करथले सेठु ही से शिखिसंती. ठीक है जी. Thank you Sunita, Priyanka, thank you, thank you, thank you. So his work focused on helping parents understand their children better and teaching them to accept children unconditionally. तांकर काम थिला जे बापा माँ मानन को सहाय्य करी, सेमान को पिला को बुझिया पाई. Parents can understand their children better. That is a fantastic work. ठीक. So teaching them to accept their children unconditionally. सेमान को शिक्षा दरकार जे सेमाने पिला को unconditionally accept करंदु बा पिला को फ्रीडम दियंदु. ओवर फ्रीडम भी नुह, जति फ्रीडम दरकार फ्रीडम दियंदु. ओके. थैंक यू प्रकाश. थैंक यू राजकिशोर. थैंक यू सो मच. पिन कर दवा. तो ई चिल्ड्रन सपोर्ट, चिल्ड्रन मानू को आपण सपोर्ट करिया दरकार अनकंडीशनली. अनकंडीशनल सपोर्ट रहा दरकार बापा मां को. अनकंडीशनल सपोर्ट रहा दरकार कर बापा मां को बोले किए बिलीव करथिले? कार्ल रोजर्स. एंड कार्ल रोजर्स भी पेरेंट्स मानन को भी सिखौथिले, बुझौथिले. तो रोजर्स वाज बोर्न इन 1902 इन नॉर्थर्न कैरोलिना, अमेरिका रे. ही अटेंडेड मेडिकल स्कूल at Johns Hopkins University and became a doctor. He did not fulfilled by his career path, so he left medicine and began studying psychology. पढ़ले सेतरे सेतरे तांगु भल लागलानी, ताकु छाड़ देले, छाड़ी के साइकोलॉजी नेले. ठीक है. तो एटी क्वेश्चन अछि दे, what theory did Carl Rogers develop and what does it emphasize in context of children learning and development? कौन आंसर दियंतु? सुश्री, संयुक्ता, शुभश्री, थैंक यू. आंसर दियंतु पिलान समझते. जे सेशन अच्छी समस्त सेशन गोटे लाइक और शेयर कर दियंतु. मो बर्थडे पे तो लाइक एंड शेयर कर दियंतु. गोटे स्टेटस दियंतु. केते सारा केते कोन स्टेटस दोसन, गोटे स्टेटस दे दियंतु. दैट कैन बी अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मी. यार सोशल लर्निंग थ्योरी तो एडा आल्बर्ट बंधुरांकर. बिहेवियरिस्टिक थ्योरी होची आपनकर वाटसन, कार्ल रोजर्स, सॉरी वाटसन
Pavlov, Skinner, Thorndike. Psychoanalytic theory तो होची Sigmund Freud. Freud जे देचन आईडी ईगो सुपर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. Yes. बुझ पाले की? तो ये आंसर इज ऑप्शन बी. अब ये तो कहले अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो. What was Carl Roger's primary focus in his work with children and what did he aim to achieve? He aimed to instill discipline and strict boundaries in children's life. His focus was on promoting competition and achievement. Competition and achievement. He worked to enhance parents' understanding their children and teach them the value of unconditional acceptance. Now he concentrated on fostering independence and self-reliance in children early development. बेसी फोकस ताकर कहाँ पर थिला? ऑप्शन सी ना? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये जो मैंने आंसर दोस्तों राइट आंसर. सत्ती, ममता रानी, रंजिता, थैंक यू. देखा आंसर इज ऑप्शन सी. So he eventually moved to California, where he studied with John Dewey and William James. John Dewey को भी जाने चाहिए, father of progressive education. Father of progressive education. Father of progressive education was John Dewey. Pragmatism रो follower. Democracy and education book भी लिखसन से. Follower of pragmatism. Democracy and education book लिखसन थी. Democracy and Education book was written by John Dewey. How John Dewey होचंदी आपनकर लैब स्कूल फॉर्मेशन करसन. लैब स्कूल तांकर स्टेटमेंट होची जे स्कूल इज ए मिनिएचर वर्जन ऑफ द सोसाइटी. स्कूल इज ए मिनिएचर वर्जन ऑफ द सोसाइटी. आउ तांकर ओडा बड़ स्टेटमेंट होची जे कोन आमे जितले पिलांक सहित कनेक्ट करछे, आमे जितले पिलांक सहित कनेक्ट करछे से कहले भाई एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ. एटा बड़ स्टेटमेंट. विलियम जेम्स फर्स्ट साइकोलॉजी फर्स्ट टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी फर्स्ट टेक्स्ट बुक जे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बही लिखिछन्ती विलियम जेम्स. ये होछन्ती फादर ऑफ फंक्शनलिज्म. साइकोलॉजी रा गोटे ब्रांच that is functionalism. Then humanism, psychology branch is functionalism. Functionalism father was William James, father of American psychology. His studies led him to become interested to human behavior and how to learn. His early work रे भलो भलो बही लिखिछन्ती on becoming a person book, anatomy of illness, peaceful warrior. These are the books written by Carl Rogers. Rogers believed that humans were capable of becoming whole persons. मनुष्यर कैपेसिटीज अच्छी, मनुष्य चाहिए निजर फुल पोटेंशियल डेवलप कर परिबो निजर सेल्फ डिस्कवरी माध्यम रे. एटा बहुत इंपोर्टेंट वर्ड. तो स्टूडेंट मान को सेल्फ डिस्कवरी रो मौका दिया जो दे कैन एनालाइज देमसेल्व्स, दे कैन ग्रो देमसेल्व्स इन देयर ओन वे. ए क्लास रे पीडीएफ मु दउछि बा दउछि सबले टेलीग्राम रे दउछि. आज साले गोटे दिन लेट रे दउछि, बट दउछि टेलीग्राम रे दउछि. मु लिखियो मूव ऑन बाय सत्य सर, मूव ऑन विथ सत्य सर. Why then? I cannot move you. You have to move with myself. Move on with Satya sir लिखी जोड़े. सर्च कैपिटल लेटर सर्च करियो से मु दउछ मिलि सबले तो दउछ. So he said that our thoughts, feelings, action influence each other. मनुष्यर थॉट, फीलिंग, एक्शन परस्पर प्रभावित करंती. We are not separate entities. Rather we are connected parts of a great whole. आमे सेपरेट नु. We all are connected to each other. You have to self discover yourself. You have to be self actualized. You have to prove yourself wholly. Wholly माने totally. बुझ पाले एती कथा. Question देछि which influential figures did Carl Rogers study with during his time in California? Sigmund Freud, B.F. Skinner, ना Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey, William James, Erik Erikson, Abraham Maslow. What is answer? What is the right answer? That is John Dewey and William James. Answer C is the right answer. According to Rogers, how did he believe humans could become whole person? Human whole person केमिति हेई परिबे?
टोटल पर्सन केमिति हे परिबे थ्रू रिगोरस एकेडमिक एजुकेशन थ्रू एक्सटर्नल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स थ्रू सेल्फ डिस्कवरी थ्रू स्ट्रिक्ट adherence to societal norms कहले बा कोन सेल्फ डिस्कवरी वेरी गुड so this his philosophy जॉन डी जो कार्लोजस को फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड मेनी साइकोलॉजिस्ट बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस करिछि दे कॉल्ड दिस प्रोसेस एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ताकू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोली कहा जाउतला आज का डेट रे साइकोलॉजिस्ट माने यूज करसन दी टर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बदले पर्सनालिटी डेवलपमेंट टर्म यूज करा होछि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माने निज को जानिबा निजर पर्सनालिटी डेवलप करिबा तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म को आज का डेट रे साइकोलॉजिस्ट माने यूज करसन दी एज ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सारा बुक लिखछन दी बुक हैला जेमदी ह्यूमन साइड ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग द वे होम बियॉन्ड द एज ऑफ चाइल्डहुड दीज आर द बुक्स written by Carl Rogers. Rogers died at the age 90 but he left behind a largely of ideas that continue to influence parenting today आज का डेट पेरेंट मानको बहुत हेल्प करछि Rogers को आइडिया ओके नवे मरि गेले बट बहुत सारा जिंस छाडी गेले व्हाट टर्म psychologists used to describe the process influenced by Carl Rogers philosophy को टर्म यूज करा होछि सेल्फ इंप्रूवमेंट सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एनहांसमेंट व्हाट टर्म which term that is self actualization yes very good so Rogers idea influenced many psychologists Rogers idea बहुत सारा psychologist बहुत सारा एजुकेटर को इन्फ्लुएंस करिछि इस समय अपन जॉन वाटसन को कथा कोंदु जेबी वाटसन जे कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट करछंती बीएफ स्किनर कोंदु फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जीन पियाजेट को कोंदु ले भाइगट्सकी कोंदु मारिया मोंटेसोरी कोंदु everyone is being influenced by Rogers. His theory continued to be cited in modern psychology today. आजिकल modern psychology रे तांको theory भी स्थान पाइछि सेम theory तो कहि होबनी तांकर मास्लो को कांसेप्ट नीड ऊपर बेस Rogers को कांसेप्ट के अलग सेम कथा किंतु अप्रोच सेम थॉट सेम अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्ल रोजर्स को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अनुसार ऑल ह्यूमंस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड व्हिच इज ए लोडेड विथ एक्सपीरियंस दुनिया सब लोक जिते सारा लोक अछंती समस्त पाखरे निजस्व अनुभूति अछि देयर लाइफ एक्सपीरियंस क्रिएट देयर रिएक्शन इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल पर्सन पीपल एंड ऑब्जेक्ट सेमानक लाइफ एक्सपीरियंस सेमानक चतुर्पार्श्व थिबा लोक मानक द्वारा सेमानक चतुर्पार्श्व थिबा सांसारिक दुनिया द्वारा प्रभावित हुए ऑल्सो इंटरनल इमोशंस एंड थॉट्स एवं इंटरनल इमोशन और थॉट्स भी एक्सपीरियंस द्वारा अर्थ माने ओवरऑल एथुर आइडिया हला जे एक्सपीरियंस प्लेज ए वाइटल रोल so this is referred to as their phenomenal field the phenomenal field indicates phenomenal field को ताको एटा को कहतला सबुठारु इंपोर्टेंट फील्ड तांको थ्योरी रो यस someone's thought behavior object reality as well as people कार थॉट बिहेवियर ऑब्जेक्ट रियलिटी मनुष्यर एक्सपीरियंस द्वारा प्रभावित हुए बोली के कहतले रोजर्स कहतले who is not mentioned as being influenced by Carl Rogers idea कि कार्ल रोजर्स का आइडिया द्वारा इन्फ्लुएंस हे नाहंती स्किनर मोंटेसोरी आइंस्टाइन पियाजेट who is not being influenced Albert Einstein नाहंती yes in Carl Rogers theory of personality development what influences an individual's reactions involving external people and objects as well as internal emotions and thoughts कोटा इंपोर्टेंट मैटर करे थरे सोसाइटल नॉर्म्स ना जेनेटिक फैक्टर्स ना लाइफ एक्सपीरियंस ना इकोनॉमिक स्टेटस बे कहले कार्ल रोजर्स दैट इज व्हाट लाइफ एक्सपीरियंस ओके हाउ डू कार्ल रोजर्स थ्योरी कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट इन मॉडर्न साइकोलॉजी रे approaches are different जे सेल्फ एक्सप्रेशन ऊपर कार्ल रोजर्स भी गुरुत्व देछन पीयूष अब्राहम मास्लो भी देछन गुरुत्व यस हाउ डू कार्ल रोजर्स थ्योरीज अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच
approach one now, method alga now. Approach is one now. Approach same केमती हो. How do Carl Roger's theory continue to be relevant in modern psychology? They are outdated. They only apply to a specific cultural context. Now they are frequently cited and continue to the contemporary psychology. आज का डेट psychology को बहुत ही गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाउछि. Yes, पकाउछि. So Carl R. Rogers acknowledge that humans' behavior is a factor stimulated by tendency of self-actualization, self to work and accomplish the highest level of their achievement. ताको कहउछि fully potential individuals. ताको कहउछि fully potential individual. That is called as fully potential individual. So fully potential individual को हमें self-actualized person बोली कहू. In this system, people create a self concept and structure of self. A negative self concept is associated with making people unhappy who they are, and a positive self concept make a people safe and secure. The प्रकार self concept है, negative self concept and positive self concept. Negative self concept can make you unhappy. Positive self concept can build up confidence you. Okay? Yes. Answer को देखो सी कहीं देखो. तो unconditional positive regard जो तम ता Carl Rogers देशन ता माने कौन? Unconditional positive regard is letting a person know that they are accepted and valued no matter what. से माने जहाँ होंद ना कहीं तंको हम accept करिए value दो. माने कहे रहा था क्लासरूम में ढेर सारा पिला आसुंती. समस्त इंगर ability समान नहीं. समस्त इंगर individual difference अच्छी. Teacher have to accept everyone. Teacher cannot ignore anyone. Yes. Even if they are flawed, we still respect and care about them. से माने भीतर कमी थाउ but we have to respect them, we have to care them. माने कहे रहा था पिला जदि किसी opinion दउची भूल हो खराब ठीक हो, you have to accept his answer. तमे तारा आंसर को एक्सेप्ट करो. That is called as unconditional positive regard. The unconditional positive regard refers to a situation where someone continues to see someone in a positive light regardless of their situation. ता situation जहाँ हो ना कहीं कि ताको मु सबले positively नेबी. तेणु आज ए टीचर मु क्लासरूम में पिलार ओपिनियन को पॉजिटिव नेबी. आज ए पेरेंट्स मु पिलार कंडीशन को क्लासरूम में पॉजिटिवली ने जो घरे पॉजिटिवली नेबी. It can be powerful sign of love, trust, commitment to another person. Yes. It can help boost a person's self-esteem, self-belief, ability to form stable and trusting relationship. Sir, relationship रे unconditional positive regard दरकार की? दरकार आज का डेट रे ठकामी रे पड़ी जो unconditional positive regard देखेले. ठीक है. माने मु कहया कथा बी प्रेम रे अंध हो कि भल पायर अंध हो किंतु बाडी धरी अंध हो. Be blind in love but have a stick with it. With you. Be blind in love but have a stick with you. अगर कोड धक्का खाले बाड़ी थी वो साथ रे. So step in हो. ताला की बुद्धि. Letting a child know you they are good person even when they misbehave. पिला यदि misbehave करछि ये एग्जांपल दिया छी. Letting a child know you know that they are a good person. पिला misbehave कले और भलो पिलाडा ये. आज काहे misbehave कर दी छोटे. You have to encourage them. Letting your wife know you will be by her side and love her even when you are arguing. Argue करू बसे. नहीं ठीक अच्छे. You are right. तमे ठीक. व्यस्त होने. तमे ठीक. जा करे तमे रो भूल हवा तक. Letting your husband know your love from him is not connected to how much money he makes. ये पैसा कितना रखुछ दीपनान में तम लव तापति रहा दरकार. माने कहयार अर्थ धनी हो गरीब हो आई एम विथ यू. दैट इज अनकंडीशनल लव जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को क्लासरूम में नियंतु. यस प्लीज अंडरलाइन अंडर द सेंटेंस. कौन अंडरलाइन अंडर सेंटेंस माने बुझ पाइले. ए सेंटेंस अंडरलाइन करी बुझतो तो कौन. चल तो आउट सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ ऊपर फोकस कर कार्ल रोजर्स. रियल सेल्फ माने व्हाट यू आर. तमे जहाँ जानिछ तमे कौन तमर ओन पोटेंशियल कौन तमे कहा बड़े हवा पे चाहूँ. दैट इज आइडियल सेल्फ. तमर जिते बड़े किछि कैरेक्टरिस्टिक्स अल्प किछि कैरेक्टरिस्टिक्स आउ जन सहित मिसे से स्टेज को कह जाए मु हेली मन कर सत्य मु हवा पे चाहूँ मन कर एलन मस्क भाया छाड़ महात्मा गांधी भाया. जदि महात्मा गांधी किछि अल्प किछि कैरेक्टरिस्टिक्स
very few characteristics, more characteristics the mystery, that is called incongruence. That is called incongruence. Yes. syllabus accordingly करछ तो syllabus accordingly जाउछ जेते अधिक characteristics मिसी जाए that is called congruence. तमर निजो characteristics को that is called a real self. हमें कहा बले आप में so that is called ideal self. When your sum of very few characteristics mixed up with the ideal self, that is called incongruence. When a large number of characteristics mixed up with the ideal self, that is called congruence test. Done. Non-directive counseling, a term that they in the Carl Rogers. Actually, counseling is of three types: directive, non-directive, and eclectic. Carl Rogers has given non-directive counseling. The Carl Rogers is the chief exponent of in this viewpoint. Non-directive counseling, jaako cause a client-centered counseling. Okay, in this counseling, it is a counsel je. Counsel कहले client. जे counseling दौची सेला counselor, जाको counseling दौची सेला counsel बा client. Okay. करी पी को डिस्कशन कर. The main function of the counselor is to create atmosphere. तले non-conditional counsel, non-directive counseling रे बा जी काउंसिल बा क्लाइंट इंपोर्टेंट रोल से प्ले करे तले एटा चाइल्ड सेंटर्ड काउंसलिंग हबो कि एटा चाइल्ड सेंटर्ड काउंसलिंग हबो तले हु प्लेज द पाइवट रोल कले इंपोर्टेंट रोल इन डायरेक्टिव काउंसलिंग. ओके बुझ पाले कि the function of the counselor is to create an atmosphere. Atmosphere create करियो जोटी का भितर काउंसलर और क्लाइंट भितर गोटे गुड रैपोर्ट थी. रैपोर्ट माने गुड रिलेशनशिप थी. गुड रैपोर्ट बा गुड रिलेशनशिप थी. सो इट इज नोन एज परमिसिव काउंसलिंग. आको परमिसिव काउंसलिंग भी कह जाए. मु काउंसलिंग मु जण कर आई एम द काउंसलर तेला क्लाइंट मु क्लाइंट को संपूर्ण भाव फ्री छाड़ देली तो जहाँ गप्या कथा गपिचल. व्हेन यू अलाउज ओवर फ्रीडम टू द लर्नर दैट इज कॉल्ड एज परमिसिव काउंसलिंग भी कह जाए. परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट भी कह जाए. व्हेन यू आर इग्नोरिंग एवरी मिस्टेक. Yes. Which biology? Done. So emotional elements rather than intellectual elements are yes. Use I think pedagogy live plus unlock me. मन पड़ू नहीं बट आई मुझे जानी पार्छ तुम डाइट पूरी रहो. थैंक यू पीयूष. चलो approaches of learning according to Rogers को approaches of learning को गुरुत्व दउथिले. को approaches of learning को गुरुत्व दउथिले. That is personalized learning. Learning is completely personalized. I can customize my learning according to myself. Self acceleration पर गुरुत्व दउथिले. Student autonomy by student freedom पर गुरुत्व दउथिले. Positive learning environment should be created in the classroom. तापर मध्ये गुरुत्व दउथिले. Experiential learning. Learner can learn from his own experience. तारे जो आज का डेट में जो NCF 2005 कहूची तो क्वेश्चन रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोना कोड से थ्योरी तो कनेक्ट कर जेठी. टीचर एज ए फैसिलिटेटर टीचर शुड इनिशिएट द डिस्कशन स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन इट. टीचर क्वेश्चन पचले पिला पार्टिसिपेट करिवे. टीचर डिस्कशन स्टार्ट कले पिला पार्टिसिपेट करिवे. यस इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होवा दरकार. रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक भी नियत दरकार. रिफ्लेक्शन माने पिला माने थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग थोड़े जहाँ चिंता करछ ता बाबद पुनर्बार चिंता करबे ताले आपण ताको कहि परिबे दैट इज कॉल्ड एज डीप थिंकिंग. यस होलिस्टिक डेवलपमेंट भी इंपोर्टेंट. सो दीज आर द अप्रोचेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमनिज्म बा कार्ल रोजर्स के अनुसार अप्रोचेस फॉर लर्निंग एवडा बुझियला. नेक्स्ट टाइम कहू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोजर्स. क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोजर्स अप्रोच टू लर्निंग व्हाट डज student autonomy emphasize? Strict control by teachers, independence and self-direction, rote memorization, uniformity in learning style. Independence and self-direction. Yes, very good. Option B.
What aspect of development does Carl Rogers recognize as integral part of the learning process? को aspect of development को Carl Rogers गुरुत्व देछंती? Cognitive only, emotional and social, physical only, behavioral only. Only the negative word in pedagogy, only the hobone, emotional and social. What is the role of teacher according to humanism? Humanism by Carl Rogers अनुसार teacher role कौन classroom रे? Teacher learning रा facilitator, teacher supportive हबो, guidance दबो, teacher पिला मानक भीतर autonomy, independence बा freedom को promote करिवो. लिखा है जी teacher should promote freedom among the learner, to promoter of autonomy बा पिला मानक को self learner बनेबो. मु तुमको माने क्वेश्चन देबी, मु तुमको प्रॉब्लम देबी, तमे सॉल्व करिवो. I will only guide you. पिला मानक भीतर पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट नर्चर बा क्रिएट करिवो. एनकरेजर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, लिसनर एंड कम्युनिकेटर. चाइल्ड टीचर शुड लिसन व्हाट ए चाइल्ड इज स्पीकिंग. पिलार आइडिया उसे सुनिबो, आइडिया कम्युनिकेट करिवो. मॉडल ऑफ एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट. प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेस. पिला मानक रिसोर्स भी प्रोवाइड करिया दायित्व कार टीचर. प्रमोटर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक. फॉस्टरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट पिला मानक भीतर प्रमोट भी करिवो कि टीचर. सिंपल एतरे कष्ट वाला पॉइंट किछ नाही, बुझी हो जातो नॉर्मल जिंस. दिस व्हाट क्वालिटीज डज द टीचर एम्बॉडी इन द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे टीचर को प्रकार क्वालिटी को गुरुत्व देछ. थैंक यू विजयलक्ष्मी. को प्रकार अप्रोच को गुरुत्व देछ. स्ट्रिक्टनेस एंड अथॉरिटी. मॉडल ऑफ एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट. अथॉरिटेरियन तो कदापि नुहे, रिजिडिटी तो कदापि नुहे. एम्पैथी. टीचर शुड बी एम्पैथेटिक. टीचर शुड एम्पैथेटिक रो अर्थ टीचर शुड प्लेस हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर्स. निजो को अन्य जगह रखी चिंता करियो. निजो को अन्य जगह रखी चिंता करियो. यस, एम्पैथी रो अर्थ अच्छा टू पुट यू योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स. निजो को आउ का शू रे रखिया पे चेष्टा करंतु. खाप खाउसन ना नहीं देखंतु. रोल ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म अनुसार स्टूडेंट रो रोल कोन क्लासरूम रे? स्टूडेंट इज एक्टिव पार्टिसिपेंट. पिला एक्टिव रहइबो. सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बा आपण त कहि परिबे सेल्फ लर्नर. सेल्फ लर्नर यस. डिसीजन मेकर इन द लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस रे डिसीजन मेकर ही होची के स्टूडेंट. गोल सेटर एंड प्लानर. Student has to set his own goal and plan accordingly. Plan accordingly. Responsible for own learning. निज own learning रा responsibility के नबो? Student नबो. Contributor to a positive learning environment. Positive learning environment create करिया दायित्व भी contributor माने positive learning environment will be created by the teacher. Student can participate in it. Student have to participate in it. Yes. Engaged in experiential learning. एक्सपीरियंशियल लर्निंग रे भी एंगेज रहिबो. रिफ्लेक्टिव थिंकर. स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिव थिंकर. रिफ्लेक्टिव थिंकर को तो ऑलरेडी कहितलु. कोलैबोरेटर, कम्युनिकेटर. कोलैबोरेशन स्टूडेंट मानक भीतर रहया दरकार. स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. स्टूडेंट शुड सर्च फॉर ऑलवेज पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड टेक द प्रीवियसली जो. What are the methods of teaching according to humanism? Humanism अनुसार methods of teaching कौन हवा दरकार? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर गुरुत्व दिया जाऊ. सॉक्रेटिक मेथड पर गुरुत्व दिया जाऊ. सॉक्रेटिक मेथड पढ़ा जाऊ. यस. अरे जति जिन सब पढ़ाउछी बुझी परछो. सेशन को लाइक कर दो. ऑलमोस्ट 65 स्टूडेंट्स आर देयर. राजेंद्र प्रसाद आपन को कांटेक्ट केम करियो. कांटेक्ट करिए नंबर कांटेक्ट. कोऑपरेटिव लर्निंग. सॉक्रेटिक मेथड माने क्वेश्चन आंसर मेथड. कोऑपरेटिव लर्निंग. पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान. पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान माने आपन को रोल ऑफ मेंटरशिप. द मेंटरशिप रोल के प्ले करिवो टीचर. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बा पीबीएल शुड बी प्रमोटेड. ओपन एंडेड असाइनमेंट पिला को दबा दरकार.
डिस्कशन बेस्ड टीचिंग हो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज हो रिफ्लेक्शन एंड जर्नल्स जर्नल्स कहले स्टूडेंट हैव टू राइट देयर ओन थॉट अबाउट द क्लास मु आज क्लास बाबद कौन कौन शिखली ताको लिखिबी बुझिबेला ओके दीज आर द approaches by methods of teaching according to humanism. The type of counseling process proposed by Carl Rogers is traveler Siva pedagogy class. Lipika, thank you. Subha, thank you. Directive, non-directive, eclectic, dominant. That is non-directive. Yes. Becoming a fully functioning person is the concept put forward by fully functioning person concept देइछन्ति कि becoming a fully functioning person is the concept put forward by अब तो कथा पिला माने जहाँ भी पढ़ो तार पीडीएफ मु टेलीग्राम में शेयर करछ टेलीग्राम में आपण सर्च करिवे कैपिटल लेटर सर्च करिवे मु कहूची मध्य मो कोन सत्य सर गैप दे सर्च गैप देवे कैपिटल लेटर सर्च करेंगे ये अच्छी आप पीडीएफ मुझे शेयर कर पीडीएफ पाई कार्ल रोजर्स तो यहाँ अच्छी जान सॉरी कार्ल जुंग कार्ल रोजर्स कार्ल जुंग दे दी पर्सनालिटी दुई प्रकार एक्सट्रोवर्ट आउ इंट्रोवर्ट नहीं गॉर्डन अल्पोर्टकर को थ्योरी ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी unconditioned positive regard for the client is one of the important characteristics of good counselor expectation of so छोटे छोटे क्वेश्चन लिखी बट वर्ड बड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन पड़चे पचा दे वर्ड बड़ा हैला रोजर्स the technique in the respect of human learning context advocated by Carl Rogers were given the caption को बड़ा टेक्निक से गुरुत्व देछंती What technique? Question about self-initiated learning. Learning should be self-initiated by the learner. Self-initiated learning. Very good. In the teaching of person-centered counseling, the congruence is related to congruence माने कौन? Unconditional positive regard. ना matching between facial expression of word. तू कहू चु जहाँ करू चु से कहिबा करिबा देखिबा ऊपर मैचिंग रहे दरकार हाँ मैचिंग रहे दरकार ऑप्शन बी हो For an effective non-directive counseling session, which one of the following will be most essential? What about essential? Training of the counselor, establishing a rapport with the client, expertise in using test, conventional fluency. ये आपन को इथर RST संस्कृत रे पड़थला. आंसर होचे establishing a rapport. Rapport माने good relationship between काका भितरे टीचर और काउंसलर और क्लाइंट भितरे. यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रेटेजी के यूज करथिले हाँ पीसीएम पे पैड क्लास स्ट्रेटेजी अवेलेबल अछि सुनिल डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रेटेजी स्टार्टेड बाय अब्राहम मास्लो के सॉरी डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड फुल बाल कर दो सॉरी शक्तिमान सिगमंड फ्रॉइड मास्लो डिवाइडेड ह्यूमन नीड्स इनटू डैश पार्ट मास्लो ह्यूमन नीड को कितना पार्ट रे डिवाइड करछन पांचटा पार्ट रे नहीं फिजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स लव एंड बिलोंगिंगनेस सेल्फ एस्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिजिकल सेफ्टी लव एंड बिलोंगिंगनेस सेल्फ एस्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं according to Maslow a state in which people reach their fullest potential by people जेतल निजर फुल हाईएस्ट डेवलपमेंट हुए तांकर ताको कह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोन ताको कह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डन सेशन को समझ थोड़ा लाइक कर देन प्लान समझते अगर पैसा पड़े कि पड़े लगेगी चार्ज पाठ जदि पाउछ पढ़ी पाउछ जदि बुझी पाउछ जदि कर करिया कथा मध्य अनकंडीशनल नो कंडीशनली कर भल लागले कर ये जो आरआई अंगनवाड़ी सुपरवाइजर जो बाहर तार जो कंबाइंड बुक जितने प्रिलिम मेन सबुथ आपको हेल्प कर यस जितने आप प्रिलिम मेन अच्छी प्रिलिम मेन
सब जगह पीवाई की भी अच्छी शायद आंसर भी अच्छी बही जो मैंने परचेज करने निज पोस्टाल आड्रेस रे परचेज करेंगे आडा स्टोर को जी बुक सेक्शन को जी आडा आप बुक सेक्शन को जाकि कोड अप्लाई करेंगे Y594S लगे एस लगे एस लगे ही ऑफर मिल ना ऑफर मिल ना ठीक अच्छे आपंकर SSB TGT बैच चलती CCM CBR आर्ट्स सब जगह सेपरेट बैच चलती 1832 टाँग पड़े जब कोड अप्लाई कर Y594 परचेज करार अच्छी परचेज करेंगे प्रीवियस देखिए क्लास सेशन में नंबर दे दीजिए मोर कंटाक्ट करेंगे ओके सहित आपंकर RI अंगनवाड़ी सुपरवाइजर कंबाइन बैच चली 17 जनवरी नुआ बैच भी 6 फेब्रुआरी स्टार्ट होती जॉइन करेंगे कहे कौन पचार रंजिता मुझे सार कहतु पचार बुझे कौन तुम कमेंटा स्किप हो जाए क्लास यूट्यूब हम 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 करें मैडम सहित पे आपंकर मैथ जो मैंने दुर्बल मैथ में मैथ प्रो बैच मैन सार 819 टाँग पड़ी कोड अप्लाई कले हवा कथा जी नब होमवर्क अच्छी होमवर्कटा आपको देवी लास्ट को बट की टू प्रोग्रेस इज टेकिंग द इनिशियल स्टेप नॉट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट समय आसिले मुझे पढ़ी एडवर्टाइजमेंट बाहर पढ़ी पढ़ आग मोमेंट को अपेक्षा करनी गो फॉरवर्ड यस एटा आपंकर होमवर्क स्क्रीनशॉट नहीं जाइए आंसर देवे कमेंट बॉक्स में होमवर्क फॉर यू ओके सो थैंक यू सो मच जो मैंने मत मत विश कले समस्त मो तरफ थैंक यू भगवान आपको भल रखु खुशी रखु आगे चलतु टीचर हूँ टीचर हवा पर्यटन जहाँ भी मो द्वारा छोट मोट कंट्रीब्यूशन आप लाइफ मुझे सपोर्ट हेल्प मोटिवेशन छोट मोट जहाँ भी हो पार आई विल स्टैंड विथ यू बिकॉज स्टूडेंट फॉर मी वन डे इज ए स्टूडेंट फॉर मी लाइफ टाइम so I have to know हाँ yes I have to stand with you सपोर्ट तो सब आगे चलते पे थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी तो क्वेश्चन देली आपंकर क्वेश्चन कमेंट आंसर देवे क्लास केमती लगुच भी कमेंट जनातु भल लगे खराब लगे आउ कौन दरकार कहतु थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू नमस्कार जय जगन्नाथ।